Good morning, everyone. Welcome to the morning call. We start with technical and derivatives outlook. In the previous week, we saw profit booking and index broke the support levels of 17,400 levels. And it also closed below that level at 17,327. This suggests a little bit of a profit booking and sideways move for the coming trading session. If you observe in the previous occasion, the Nifty has taken Nifty moved from the levels of 17,166. So most probably for the week, we might come close to 17,166 or near to the psychological level of 17,000. That should be the view for the Nifty. Whereas in case of Bank Nifty, week on week, the Bank Nifty was down by 3%. And most importantly, the Bank Nifty broke the support level of 40,200 intra-week support level. So below 40,200 was the level from earlier the buying did come in. So below 40,200, there is a little bit of loss of momentum and further sideways to profit booking can be seen. If you look at the level wise, so 39,000 and 38,500 are the levels for the Bank Nifty, where again it can find support. Overall, the trend for the Bank Nifty is positive. So as long as 38,500 levels are not broken, we are in uptrend. So any declines close to these levels should be viewed for the stock specific buy in the Bank Nifty. Coming to the sector specific, in the previous week, FMCG, healthcare, selected auto weather sector, which showed strength. Basically, in FMCG, Marico, HUL, ITC is looking good. As if you come to healthcare, Metropolis and Sun Pharma is looking good. And stock specific in auto, Aisha Motors and Hero Motoco are the counters which are looking good on charts. Whereas profit booking was seen basically in the both the private banks and PSU banks. So stocks like Federal Bank, RBI, IndusInd Bank, followed by PNB, Canara Bank, Bank of Baroda, and SBI, witnessed little bit of profit booking from its high. So most probably, whenever the Bank Nifty comes to the support level or close to this 38,500, these are the stocks which can be again viewed to re-enter the long position as we have a long-term positive view on this counter. Coming to the derivatives data, as per open interest data in Bank Nifty, put writing was seen at 39,600 strike price, and call writing was seen at 40,500 strike price. Nifty futures open interest saw short built up to the tune of 2.63%, which is an addition of 0.39 million shares, with the total outstanding at 14.08 million shares. If we come to put call ratio, the put call ratio was down from 0.90 to 0.76. So the PCR has come down in the previous session. So major additions have happened in the put options at 17,300 and 17,400 strike price in the derivative segment. While on the call option front, major additions were seen at the 17,600 and 17,800 strike price. Coming to Bank Nifty open interest stands at 26.69 lakh shares against 24.48 lakh shares as compared to its previous day close. Thus, this also indicates the short build-up in the Bank Nifty with the additions of additional 10.3% open interest in the Bank Nifty. As per derivatives data, some long build-ups are seen in Cipla, ITC, and Tata Steel, whereas short build-ups are seen in Power Grid, M&M Finance, and Idea. Further coming to the FI data, both in cash and futures, they were the net sellers. In futures, they sold 2,899 crores, whereas in that was in cash. In futures, they sold close to 36,000 contracts, and the long short ratio for the FIs is 20%. They are 20% long in the market and 80% short in the market. DY was marginally positive by 299 crores, which is kind of neutral.
So overall, the bias maybe for the week, it is little bit cautious. Profit booking can be seen further for a day or two ahead of the weekly expiry. We maintain a cautious book. Lower side again, the buying should pick up. So 38,500 remains the demand zone for the support for the bank Nifty, whereas 17,000 close to 17,000 remains the demand for the Nifty futures. So that's all from technical side. I will hand over to Vishal sir for more updates. Yeah, good morning. To start up with a couple of research related data point which came in. One is RBI has published a scheduled bank statement position for at all India level for the 9th September. As per the data, credit growth continued to remain strong at around 16% on Y&Y basis, and deposit grew by around 9 odd percentage. Now, what we understand is this growth is led by surge in the corporate demand. Beside, there is a steady growth in retail and MSME loans. Banking industry has witnessed the highest credit growth in more than 8 years in this particular year, and overall I think we understand this is positive news for the banking industry as a whole. And our topics remain HDFC Bank, ICICI Bank, IndusInd, as well as Federal Bank. Next is on update on Britannia. So Britannia board has has appointed Varun Berry as an executive vice chairman, managing director with the immediate effect. And Britannia board has also announced appointment of Rajneet Kohli as a ED and a CEO. Rajneet Kohli will report to Varun Berry, and before joining the Britannia, Rajneet has served in numerous leadership positions during the 25+ year, which include Asian Paint, Coca-Cola, Jubilant Foodwork. Overall, I think it's a positive development, and we currently have a hold rating on the stock with a target price of 3968. And overall, I think in this market, which was briefly discussed at the initial time of the call, defensives will be probably will be in the limelight for at least a couple of weeks. So Britannia is one such stocks, including HUL in FMCG space. Next update is on Nestle. So Nestle has the plan to announced investment of around 5,000 odd crore in India over the next 3.5 odd years. The investment will be on the capex front, setting up plants and expanding the product portfolio of the company. Management will also be exploring opportunities for the merger and acquisition in this 5,000 odd crore capex plan. Currently, I mean, if you look at Nestle operates now 9 odd plant and is looking at a new location to set up manufacturing units. Currently, we have a hold rating on the stock, the target price on 90,370. Next is on IHCL. So, company has announced its first hotel in Ahmedabad, that is Vivanta brand hotel, and this hotel is in partnership with Leela Group of Company. It boasts of a contemporary design that pays tribute to the city of vibrant spirit. The hotel has 176 odd room with a couple of suites also. With the addition of this hotel, IHCL will have 19 hotels in the state of Gujarat and 5 under development property. In terms of our recommendation, we have a hold rating with a target price of 302 on this stock. Infosys has announced that it will be opening up starting operation in Visakhapatnam unit from 1st of October. This unit has a seating capacity of around 1,000 odd seats and will expand to 3,000. And if you look at 3,000, will be around 1% of its total employee base. It's situated in Madhurwada, SEZ, and this bodes well for Infosys, as the unit will help the company to attract competitive talent at a better cost vis-a-vis the metro cities. We have a hold rating on this stock with a target price of 1,510. A couple of other news flow has been on for the Railtel Corporation. Mr. Sanjay Kumar has been appointed as the chairman and managing director. Earlier, he was director marketing in Railtel Corporation, and overall within the company they have taken this. They have moved director marketing to a role which is higher, which is bode well. And there's no earlier the thought process was they will be taking someone from outside the company, but now they have taken promoted an internal guy, which is positive, and it bodes well in terms of continuity. We don't have a rating on the stock, but overall Railtel is a beneficiary of overall a telecom kind of play, which includes broadband services and NLD services. Last thing from my side is on Axis Bank. So CEO Mr. Amitabh Chaudhary will be holding a press conference for a strategic business announcement. Overall, I think we need to wait and watch and see what exactly the business announcement is. Historically, I think these kind of event
They are for marketing, but it bodes well for in terms of overall a growth plan the company announced. So we'll wait and we'll update you most probably once it is concluded. Yeah, that's it from my side. Over to you now. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. We'll see more further updates. BPCL has signed an agreement with the Brazilian national company Petrobras for sourcing crude oil from Latin American nation as a part of plans to diversify sourcing needs. BPCL imports a large volume of crude oil, which is turned into fuel as its three oil refineries. Second is on Embassy Parks. Blackstone is going to sell worth up to 400 million stake in Embassy Office Parks REIT, and this is the biggest investment trust in India. And this would be partly taken by a block deals, and this would be taken by Abu Dhabi's sovereign wealth fund partial to pick up most of the stake. Then this has been reported by Reuters. Lakshmi Organics, the specialty company, has resumed its operation in Mahad plant in Maharashtra. It will continue to increase its capacity utilization in the next few weeks. The plant was shut down for a regular maintenance for 21 days. Next is on Ambuja Cements. Ambuja Cements has been placed on the short-term watch list after it has surged for 40% after the acquisition by billionaire Gautam Adani of the company in May. And this ASM mechanism is basically used to alert and advise investors to be extra cautious while dealing with this security. So it has been placed into short-term ASM framework. Next is on Sterling Wilson. The company has bagged and reported a USD 1.5 billion order from the government of Nigeria, along with its consortium partner Sun Africa. This is basically used for setting up the solar PV plants, and this order will be executed to Sterling and Wilson US subsidiary Sterling US Inc. For Siemens, the NCLT has dismissed an appeal by Siemens against the invocation of its bank guarantees by Meenakshi Energy. Meenakshi Energy was presently facing insolvency proceedings for setting up a 700 megawatt thermal plant with Siemens for the subcontractor for the project. Today, there is a new listing. Harsha Engineers, that is a bearing cage manufacturer which has got a good response, is going to list on the market today. 755 crores IPO. Overall, if we see the issue was robustly subscribed, and we could see a 75% of subscription overall. 74% on the issue price. The Kotak Bank Group has announced a senior management project, which will see Lakshmi Iyer taking charge as the Chief Executive Officer Investment Advisory Business, and the CIO for the fixed income and the head of the products in the assets management succeeds Shrikant Subramanian, who was earlier appointed as the head of Kotak Cherry. And Deepak Agrawal will now also lead the fixed income investment team as a CIO and fixed income at Kotak Mahindra AMC, while Abhishek Biswani has been advised as the head in fixed income as per this segment. Reliance digital commerce platform JioMart is also now gearing for the festive season as it readies to compete with Flipkart and Amazon this year. The platform will operate like a marketplace for offering multiple brands with items spanning from electronics, consumer durables, fashion and lifestyle, beauty, home and kitchen and grocery. JioMart also announced of its month-long sale period for the upcoming festival season, and JioMart has also increased the selection multifold by onboarding many sellers across its various categories. Next is on Vedanta. Metal and oil conglomerate Vedanta has proposed a reorganized capital and transferred 12,587 crores from central reserves to its retained earnings that has borne backing of the US-based proxy firm Glass Lewis. Vedanta has convened a meeting of shareholders on October 11 for the approval of this said scheme. And in the notice of the shareholders, Vedanta has also said that the firm had also over the years built up significant reserve for this transfer of profits. Coal India has signed an agreement with three PSUs, that is BHEL, IOC, and GAIL. This is set up for their phase gasification project. Through gasification process, the coal is converted into syngas, a fuel gas which can be used to downstream the production of value-added chemicals. The government aimed to achieve 100 million tons of coal gasification in the next 8 years in order to reduce the import of crude oil, which otherwise is used to produce syngas. Next is on ONGC. Iran has offered ONGC Videsh Limited and its partners a 30% interest in the development of the Farzad B gas field, that is in the Persian Gulf region, which was discovered by the Indian consortium. ONGC Videsh, the overseas arm of the ONGC, in 2008 had discovered this gas field for 3,500 square kilometer in Farsi offshore block. And in 2011, it has also submitted a master development plan to bring the discovery of this project. But the negotiation got stalled due to international sanctions was slapped on Iran over its nuclear plans.
Next is on Anupam Rasayan. The company has been directed by the Gujarat Pollution Board to pay 1 crore as an interim environmental damages compensation for their affected air quality due to fire. Next is on Suzlon Energy. The company said it has board has approved a raising of 1,200 crores via rights issue of 240 crore shares. The securities issue of the committee of the board meeting would be held on Sunday and approve the rights issue to the regulatory. This said in a regulatory filing. So that's it from my end. I'll hand over to Shafija for Hindi updates. Thank you. थैंक यू एवरीवन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में देख लेते हैं अपडेट्स को. तो आरबीआई ने बेसिकली शेड्यूल बैंक्स का जो स्टेटमेंट है, जो पोजीशन है इंडिया में, उसका डेटा पब्लिश किया. तो ये डेटा से पता चल रहा है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो ग्रो हो चुकी है 16% ईयर ऑन ईयर और अभी वो है 129 ट्रिलियन. और जो डिपॉजिट ग्रो है वो हो चुका है 9.3% से और अभी ये है 175 ट्रिलियन. जो एनालिस्ट एट्रीब्यूट है उससे अनुसार जो ग्रोथ है वो कॉर्पोरेट डिमांड में, इसके अलावा स्टडी ग्रोथ देखी गई है रिटेल एंड एमएसएमई लोन्स में. तो बैंकिंग इंडस्ट्री हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ विटनेस कर रही है जो लास्ट 8 साल है उससे ज्यादा. तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए. तो हमारे जो टॉपिक है बैंकिंग इंडस्ट्री में वो है आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक एंड एचडीएफसी बैंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से. नेक्स्ट अपडेट था ब्रिटानिया के ऊपर. ब्रिटानिया इंडस्ट्री है, उनके जो बोर्ड है उन्होंने वरुण बेरी को एज अपॉइंट किया है एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. और ये जो इफेक्ट होगा वो 23 सितंबर से 2022 से हुआ है. और इसके अलावा कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो रंजित कोहली को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है. और इसका जो इफेक्टिव होगा वो 26 सितंबर 2022 से. जो रंजित कोहली है उनको रिपोर्ट करना है वरुण बेरी को. और ये जो रंजित सर है वो उन्होंने पहले 25 साल जो करियर किया है वो और एशियन पेंट्स, कोको कोला, जुबिलेंट फूड जैसे कंपनियों में उन्होंने न्यूमरस लीडरशिप जैसे रोल्स को किया है. तो करंटली कंपनी के ऊपर हमारा होल्ड रेटिंग या जो स्टॉक की टारगेट प्राइस है वो 3968 है लॉन्ग टर्म के हिसाब से. नेक्स्ट अपडेट है एफएमसीजी स्पेस में नेस्ले के ऊपर. नेस्ले ने प्लान किया कि वो इन्वेस्ट करेंगे 5000 करोड़ इंडिया में ओवर नेक्स्ट 3.5 इयर्स में. और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कैपेक्स फ्रंट में और जो उनका सेटिंग प्लान्स होंगे उसके लिए और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको एक्सपांड करने के लिए. और मैनेजमेंट में बोला है कि ये जो मर्जर और एक्विजिशन की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको भी वो एक्सप्लोर करेंगे. अभी नेस्ले इंडिया ऑपरेट्स कर रहा है 9 प्लांट्स इंडिया में और अभी कंपनी देख रही है कि न्यू लोकेशन सेटअप होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. और करंटली हमारा स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 19,370 है लॉन्ग टर्म के हिसाब से. इंडियन होटल कंपनी है, उन्होंने एक विवांता होटल अहमदाबाद गुजरात में फर्स्ट डेब्यू किया है. और ये होटल की जो पार्टनरशिप है वो लीला ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ है. तो ये बूस्ट करेगा बेसिकली जो डिजाइन पे ट्रिब्यूट जो है सिटीज वाइब्रेंट प्रिंट उसको किया है लेकर. और अभी कंपनी के पास 176 स्टाइलिश डिजाइन रूम्स है और सूट्स है और 550 स्क्वायर मीटर वर्सेटाइल बैनिक्वेट भी है. और ये जो बैनिक्वेट है वो आइडियली मीटिंग्स एंड सोशल सेलिब्रेशन के लिए यूज होगा. तो अभी 19 होटल्स है गुजरात स्टेट में इंडियन होटल के पास और जो 5 है वो अंडर डेवलपमेंट है. करंटली स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 302 है लॉन्ग टर्म के हिसाब से. आईटी सेक्टर में इन्फोसिस है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक ऑपरेशन यूनिट है वो विशाखापट्टनम में स्टार्ट करने वाले 1 अक्टूबर से. और ये यूनिट की जो कैपेसिटी है वो 1000 सीट्स की है पर आगे जाके वो एक्सपांड होके 3000 होगी जल्दी. तो ये 1% जो उनका करंट टोटल एम्प्लॉय है उसके अराउंड बेस है. और ये जो यूनिट है वो मधुरवाड़ा में सेज में सिचुएटेड है. और ये इन्फोसिस ने बोला कि ये जो उनका यूनिट है वो हेल्प करेगा कंपनी के जो कॉम्पिटिटिव अट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटिटिव टैलेंट है वो अट्रैक्ट करने के लिए बेटर कॉस्ट में. और हम लोग ये कंपेयर करेंगे मेट्रो सिटीज के लिए तो ये एक अच्छा है. और करंटली स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 1510 है लॉन्ग टर्म के हिसाब से. एक्सिस बैंक है, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ चौधरी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की है स्ट्रैटेजिक जो बिजनेस अनाउंसमेंट है उसके लिए.
तो ये एक वेट एंड वॉच जैसे करने जैसे होगा कि बिजनेस अनाउंसमेंट क्या करते हैं वो। रेलटेल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने अपॉइंट किया है संजय कुमार को एज ए चीफ एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसका जो इफेक्ट होगा वो 23 सितंबर से हो गया है। नेक्स्ट अपडेट इज सुजलॉन एनर्जी के ऊपर। कंपनी के जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव किया है 1200 करोड़ फंड रेज करने के लिए राइट इशू के हिसाब से, 240 करोड़ शेयर्स। नेक्स्ट अपडेट है अनुपम रसायन के ऊपर। कंपनी को गुजरात पेट्रोलियम कंट्रोल बोर्ड से डैमेज कंपनसेशन 1 करोड़ का इंटरिम एनवायरमेंटल डैमेज कंपनसेशन का फाइन लगाया गया है, और क्योंकि वो जो फायर हुआ था उसके कारण एयर क्वालिटी वो अफेक्ट हो चुकी थी। देन नेक्स्ट अपडेट है कोल इंडिया के ऊपर। कोल इंडिया ने एक साइन किया है अग्रीमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ। तो पब्लिक सेक्टर में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, BHEL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड गेल है, जो सेटअप करेंगी सरफेस गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। और ये जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है उससे कोल कन्वर्टेड होके सिनगैस होगा, फ्यूल गैस होगा, जो यूज होगा डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन, और ये एक वैल्यू एडेड केमिकल होगा। तो गवर्नमेंट का एम है कि वो 100 मिलियन टन्स कोल गैसिफिकेशन नेक्स्ट 8 इयर्स में अचीव करे, और इससे जो इंपोर्ट क्रूड ऑयल है उसका रिड्यूस होगा, तो जो हम लोग अभी प्रोड्यूस सिनगैस करेंगे उसके कारण। नेक्स्ट अपडेट है वेदांता के ऊपर। वेदांता ने को एक प्रपोजल मिला है जो रिकॉग्नाइज करेंगे कैपिटल एंड ट्रांसफर 12,587 करोड़, जो जनरल रिवर्स रिटेन अर्निंग्स है जो उनको मिला है US बेस्ड प्रॉक्सी एडवाइजर फर्म ग्लास लेविस से। तो ये एक वेदांता कन्वर्ट होके मीटिंग जो शेयर होल्डर्स की जो कंपनी की जो है वो 11 अक्टूबर को है, ये अप्रूवल के लेके। नेक्स्ट अपडेट है रिलायंस के ऊपर। रिलायंस रिटेल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनमें जो जियो मार्ट है वो अभी गेयर अप कर रहा है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उसके कारण। तो वो मोस्टली जो रेडीज कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो दिस ईयर मतलब ये साल में आए हुए उनके कंपटीशन के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म बेसिकली ऑपरेट करेगा मार्केट प्लेस जो ऑफर करेगा मल्टीपल ब्रांड्स को और आइटम्स को, जो स्पैनिंग उसमें है, स्पैनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, फैशन लाइफस्टाइल है, ब्यूटी, होम किचन एंड ग्रोसरी है। तो जियो मार्ट ने अनाउंस किया है कि वो रोल आउट करेंगे मंथ लॉन्ग सेल्स, मतलब ओवरऑल द लॉन्ग मंथ सेल पीरियड के लिए, जो अपकमिंग अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है उसके लिए। और उससे जो उनका मल्टीफोल्ड ऑनबोर्ड एडिशनल सेलर्स है कैटेगरीज वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अपडेट है कोटक बैंक के ऊपर। कोटक बैंक ने फ्राइडे अनाउंस किया कि वो सीनियर मैनेजमेंट रेजीज है उनको बोला है कि वो सी लक्ष्मी अय्यर चार्ज चीफ एग्जीक्यूटिव एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो उनका बिजनेस है उनका वो लेंगे, और जो लक्ष्मी अय्यर है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर वो फिक्स इनकम एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट असेट मैनेजमेंट बिजनेस है। और उसके बाद जो दीपक अग्रवाल है जो लीड करेंगे फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। देन अभिषेक बेसन जो है वो एलिवेटेड हेड एंड फिक्स इनकम रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट है सीमेंस के ऊपर। NCLAT ने उनकी जो अपील था इन्वोकेशन बैंक गारंटी मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड के साथ उसको डिसमिस कर दिया गया है, और जो ये मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड है वो अभी करंटली जो इंसॉल्वेंसी का फेस कर रही है। जो उन्होंने पहले सेटअप किया था 700 मेगावाट थर्मल प्लांट जो सीमेंस के सब कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट था। देन स्टर्लिंग एंड विल्सन एनर्जी जो कंपनी है उनको एक ऑर्डर मिला है USD 1.5 मिलियन का गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया से, और जो कंस्ट्रक्ट करेंगे पार्टनर सन अफ्रीका से, और ये सेटअप करेंगे बेसिकली पावर प्लांट्स, और जो उनका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा स्टर्लिंग विल्सन US सेटअप डाउन, जो उनकी सब्सिडरी स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर सॉल्यूशन कंपनी है उनके सब्सिडरी से। नेक्स्ट अपडेट है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर। लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो स्पेशल केमिकल कंपनी है उनका जो 21 डेज से मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए प्लांट शट डाउन हो गया था, तो उनका जो ऑपरेशन है वो रिज्यूम होगा महाराष्ट्र में जो महाड़ में प्लांट है उसका, और ये इंक्रीज करेंगे जो उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। देन भारत पेट्रोलियम है, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है ब्राजीलियन नेशनल ऑयल कंपनी के साथ पेट्रोबास के ऊपर,
जो क्रूड का जो सोर्सिंग है लैटिन अमेरिका नेशन से, और जो उनका प्लान है कि बेसिकली ये डाइवर्सिफाई होगा सोर्सिंग के लिए, और ये इंपोर्ट लार्ज वॉल्यूम क्रूड ऑयल होता है जो टर्न होता है फ्यूल में 3 ऑयल रिफाइनरीज में. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. नाउ आई विल नाउ लास्ट अपडेट फ्रॉम द मार्केट. मार्केट का जो व्यू है वो 17,000 सपोर्ट है, और जो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 38,500 है. तो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी बाय ऑन डिक्लाइंस, और ये वीक के लिए थोड़ा कॉशियस व्यू रहेगा. सो दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द कॉन कॉल. हैव अ नाइस डे.